So we are live. So welcome, friends, to a new episode of Indian Food and Football. Today we have new guests comprising of a fan club, and it's none other less like Highlander Brigade, one of the most sought out fan club in the country right now, with 5 years of existence. I think officially you guys have completed 5 years this year, right? You Yeah, started in back in November. 2017, and right now we are at. Yes, yes. And right now we are 2022, so 5 years, yeah. Glorious 5 years, I would say, where on the field, I think there was nothing much to cheer about, but the fan club has made it a point, I think. And thanks to you all who have been an instrumental part in making this club or this your fan club a huge success. I think now also when the team is languishing in the 11th spot in the table, the last spot, but I still see Highlander Brigade filling the stadium, which is a great sight. I think tomorrow also, when you face Mumbai City FC in Guwahati, I think Tino mein anybody will be there tomorrow. I think the guys from Guwahati and around Assam will join, surely. Not Yes, from the we'll Highlands be per there se. tomorrow. Okay, okay. Okay, so tomorrow will be a great day. I think I would say that tomorrow when we in this podcast, I think we will at the end we'll discuss something positive, and when we'll go the way forward for Highlander Brigade, that we'll discuss in the later part of the show. So welcome all in the show. Thanks, Adit, also to making it point to visit the show now. So we'll start. So I think Adit, any question? I Yes. think you would start with the questions to them. I think first Anshuman, Manas, and Vikas will lay the questions on basis of that. We will discuss accordingly and put up our questions. Thank you, guys. Thank you. Now over to Adit. Sure. Thank you so much. And once again, welcome to three of you on behalf of Indian Food and Football. So we are obliged that y'all have agreed to come on this podcast and just share your insights on Northeast United and Indian football. So yeah, once again, thank you. So just wanted to discuss, like, just want to start with the first basic question. Like, the season has been a very rough one. Like, if you discuss from a fan's perspective. So if I just start by the first match, I think we all saw that Northeast was robbed of a point because they had scored a genuine goal and that was disallowed by the referee due to some unknown reason. And I think since then that goal could have created wonders for the season ahead, but I think somewhere down the line it just demotivated. Even the coach was shown a red card. So just starting by that, do you think that that was something like the season could have changed if that goal would have been allowed? Okay, I'll go ahead and answer that. I think you cannot blame the performance for the whole season on a solitary goal. That could have avoided us some of the unnecessary records that we have or unavoidable records that we are creating this season. But yeah, the disallowed goal was hurtful, and the topic that the level of refereeing that we have in the league is for another matter of another debate. But I really hope that one goal cannot define a whole season or one disallowed goal for that matter. So, yeah, although that goal was crucial for what happened in the next upcoming matches, but you cannot blame the performances on a solitary goal. I get it. Yes, definitely. But somewhere down the line, yeah, definitely the 6, 7 matches that Northeast have played, that goal wouldn't have defined it. But definitely somewhere down a point from Kandirava would have, I think, boosted the morale of the boys. Yeah, true. Not denying that. Yeah, true. So yeah, the second thing that when it comes to about Northeast United is like, frankly speaking, if you all follow all the other teams, like if I talk about the one of the best teams in the league, Mumbai City FC, like if you see the team, the midfield, Apuya, Bipin Singh, and you have Changte. In Hyderabad, you have Chingal Sena. In Bangalore, you have Udanta. In Mohun Bagan, you have Ashish Rai. In East Bengal, I think the only bright spot they have is Lalchunga, who is playing. So every team has some of the brightest Northeast talents that they are playing. Okay, so like every team, apart from if you remove the foreigners, I think Orissa has Jerry and Isaac. So if you remove the foreigners, I think these Northeast guys are literally driving the team. Like they are the major reason for the success for most of the teams. So it's very good to see. It's very good if you look at it from the region perspective. But again, if you look at the Northeast football team,
where do you think is the gap? I think this is a much deeper problem than if you only talk about this season. I think it has been a problem for the seasons earlier also. So I think what is the cause, or where is the gap, you think? Uh, See, Northeast United FC, as the name suggests, we're representing the hotbed of Indian football, right? And Absolutely, if you go absolutely. and if you go and visit the region, the people in the Highlands, they understand the tactical aspect of the game. They understand football, and there has been always the predominance of football over cricket, and the footballing culture has always remained. But focusing on that, this has always not been reflective of what's going on field. And as you have already mentioned, all the other clubs, they treat Northeast United FC as their marketing spree and they take all our best players. Absolutely. That's the problem, right? But if you see throughout the years, credit where it's due, we have scouted some bright players, some from the region and like Bartolomeo Ogbeche, and you know what he did in the subsequent seasons for other teams as well. Even if you look at our sister club, Isol FC, if you don't have termed that, but yeah, Isol FC, they have always scouted good players from the region. So the problem has somewhat been scouting good players from the region and them being taken away by other clubs. The main problem, which I believe, is that retaining the players that you have scouted and from the region also. Like as you have mentioned, Apuya, because of financial pressures and for the 2 crores price tag that he was in, it's understandable why the club sold him. Even if you sign players, it has been done by other teams as well, selling the good players for money. That's not uncommon in football. But the main problem has been replacing those players with good players. That has always been the issue with the club. Yeah, the Bright Stars. I would even go to the far of length to say that if Northeast United FC feels only the best 11 players from the region, they could win you the cup, they could win you the league. So such is the talent from the region. But very because of poor management, you can say, or because of the problems of transparency or hierarchy in the league, it does not always get reflected. That's quite a sad scene. So scouting is a problem, has always been, and the main problem has been retaining the players that you have scouted from the region. So yeah. Absolutely. I think just ending, just starting from where you are ending it. Just a question for like Bikash. So why you think, like, what is the problem with the management? Like, I shouldn't use the term, but is it like money minded? Like they want to just sell off the best talents. Just we have seen it in the case of Apuya, one of the brightest talents, and he's like creating wonders in Mumbai City FC in the midfield. So was it only because of money that he was sold? I want to mention that the club is already having a great loss. It's a great loss already they are facing. So अगर हम ऐसा माने कि पैसे के कारण ही इन्होंने सारा जितना भी हमारा जो प्लेयर्स है इनको जाने दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स है उनका भी एक ओपिनियन रहता है कि वो खेलना चाहते हैं कि नहीं क्लब के लिए. तो मेरे हिसाब से retaining the players as well as the players either want to play for the club or not, that is also matters a lot. So yeah. ओके, तो आप बोल रहे हैं, हाँ, मतलब तो कहीं अगर प्लेयर खेलना नहीं चाह रहा है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल आई थिंक नॉर्थ ईस्ट में फैन सपोर्ट है, इतना पैशन है वो रीजन में, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर एनी प्लेयर व्हेन यू आर प्लेइंग कंपेयर टू उड़ीसा और हैदराबाद व्हिच इज रिसेंटली ग्रोइंग. सो अगर उस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि प्लेयर खेलना नहीं चाह रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या दूसरा एंगल से देख सकते हैं कि मे बी मैनेजमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग देम द एडिक्वेट सपोर्ट और टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज, बिकॉज रिसेंटली वी हर्ड वन ऑफ द नाइजीरियन प्लेयर हु लेफ्ट, there was rumors in the market that he was not provided a certain facility. तो यहाँ पे भी कहीं पे we can blame the management for it, lack of unprofessional attitude. See, I cannot say anything from the management point of view. Like, we are not the representative of management, right? So we can't say that whether they had provided the proper facilities to the players or not. But regarding that rumor, the club has already published an official statement on their social media handles. So yeah, it's clear, and also some of the players have also showed some of the pictures of the facilities that the club has provided to the players. So I don't think so the facilities के कारण कोई भी छोड़ता है हमारे जो क्लब है. और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि
हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, बहुत सारे जो प्लेयर्स है, उनको चांस भी देता है फर्स्ट टीम में खेलने के लिए, जो कि चांस शायद से किसी और टीम में ना मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं एटीके मोहन बागान, तो वहाँ पे इतने टैलेंटेड प्लेयर्स बेंच बेंच में मतलब रहते हैं। तो वो प्लेयर अगर चाहे तो नॉर्थ ईस्ट में आके नॉर्थ ईस्ट की तरफ से फर्स्ट टीम में खेल सकते हैं। तो गेम आई टाइम डोंट थिंक मिलेगा। सो कि या राइट। Correct. Yeah, Bikash, go on. Correct. Yeah, I think Shayan, you can go ahead now. So what we discussed with both Manas and Vikas was that basically the club is going through a very tough phase, and the positive part is the fans. I think the numbers have reduced in Indira Gandhi Athletic Stadium. What I have seen, the attendance has. I think they have the highest degrowth number in compared to 2019-20 numbers if I compare with other clubs right now. Which is I think much more justified as because fans generally when what we see is that they always want to have a great time in the stadium and they want to go with their family, spend some time out of their work, and when they go to the stadium they want to see the win. सभी चाहते हैं अपना टीम जो खेले वहां पर जा रहे हैं स्टेडियम में जाकर अपनी टीम का जीत देखना चाहते हैं, राइट? And it has been a long journey. If I see, means I think in last 9 years, there is two time only. I think they've gone to the last four. There was two time. I think दो बार उन्होंने ये feat achieve किया है. And I think this is one of the most. I या think राइट। currently जो जितने भी club that is the most one of the worst performance has been done by the club. विकास जो बोल रहे थे it is quite justified. I totally agree that हाँ the club has been into losses, but don't you think that Northeast is a place I think where the club should not be in losses if it is run properly? Because what I think the fans are there. I think Northeast का मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर ऑफिशियली मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्ट का ऑल ओवर इंडिया जो फैन बेस है, all over India मैं बता रहा हूँ, in Kolkata also when we see when there's a match against Mohun Bagan or Northeast, I think Arit went to see that game. There was huge people from Kolkata who went to see that game. Northeast fans who were here. I think Northeast fans are there in all over the place. Once I remember when I went in Jawaharlal Nehru Stadium in Delhi. मैं आप विश्वास नहीं करोगे. I think this was the year in 2018. और मैं गया था उस स्टेडियम में. दिल्ली डायनामोस वाज अ टीम दैट टाइम आई थिंक एंड उनके साथ नॉर्थ ईस्ट का गेम था. एंड अभी भी मेरे को याद है. आई रिमेम्बर आई वाज देयर इन द स्टेडियम और मेरे को लग नहीं रहा था किसका होम मैच है. मैं मैं तो न्यूट्रल था बट मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था किसका होम यस। मैच चल रहा है. जो होम की इतना सपोर्टर है ही नहीं एंड इट वाज फुल. मैं नॉर्थ ईस्ट साइड के साइड में ही बैठा था बिकॉज चलिए मैं तो ईस्ट का ही हूँ. आई वुड सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट सम वे अगर मेरे पास ऑप्शन है. बट व्हाट आई सॉ वाज देयर वाज that is the fan base this club is having. So the loss का बात बाद में आता है एक्चुअली. जो आई थिंक अभिषेक लाखर आई थिंक who has written it, poor ownership and unable to exploit the huge potential of the region. I think that is somewhat is hurting that club's progress in the long run. आपको नहीं लगता? पहले मैं अंशुमन को पूछता बिकॉज अंशुमन हैज नॉट बीन देयर. अंशुमन ऑन फील्ड आपको क्या लग रहा है? आई थिंक व्हाट इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ? आपको क्या लग रहा है? what part is going wrong and what do you think you can correct and good? Because you have a very good coach. I think Marcus Bulbul has a very good reputation and he was a part of I think he was part of Israel national team also prior to this. So he's a very good coach. And आपके पास टीम आई अंडरस्टैंड इंडियन प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं है जो अरित बोल भी रहा था. बट somehow I feel अगर आप पहले से थोड़ा सीजन शुरू करते. इस बार आप लोगों ने डुरंड कप खेला था बट विदाउट फॉरेनर्स राइट. विदाउट फॉरेनर्स खेले थे आप लोग ने. एंड फिर वो फॉरेनर आया था वो चला भी गया था. दैट इज समथिंग रॉन्ग. बट आपको नहीं लगता अंशुमन क्या गलत हो रहा है ऑन फील्ड? पहले आप ऑन फील्ड का बात बोलिए बिकॉज दैट ये चीज ना मेरे को जानना है. बिकॉज मैं एज अ फॉलोअर ऑफ इंडियन फुटबॉल आई ऑलवेज थिंक दैट ऑल द क्लब शुड डू गुड. एंड अ क्लब जिसमें आप लोग जैसे फैंस हो जिसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा है. ये आदमी जोरट से ज्वाइन कर रहा है, एक आदमी दिल्ली से ज्वाइन कर रहा है, एक आदमी आप कहां से? अंशुमन फ्रॉम वेयर यू हैव जॉइंड इन? अंशुमन आप म्यूट में हो शायद.
हाँ अंशुमान बताओ. Ayushman, sorry, Ayushman, I can't hear you now. Yeah, I think I'll take this question to Vikas. I think we have to change the pattern then. ठीक है? विकास विकास को ही मैं पूछता हूँ. पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया. डिफेंस थोड़ा अलग हो Okay. गया एंड फॉरवर्ड लाइन को डिफेंस का काम करना पड़ेगा. तो आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एक्चुअली ऑन फील्ड? आपको क्या लग रहा है? इज देयर इज अ टैक्टिकल इशू और व्हाट इज द इशू? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? Okay. See, there are lots of things going wrong with this season, and it is started not just now, but it has started since the preparation of this season. Like जब डूरन कप स्टार्ट हुआ था, और डूरन कप स्टार्ट होने से पहले जो प्रिपरेशन टाइम रहता है, लाइक अगर आप कंपेयर करें हैदराबाद एफसी और लाइक अदर आईएसएल क्लब्स, तो इन क्लब्स ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अगस्त में ही, और उस समय हमारे जो प्लेयर्स थे, शायद से उनको कांटेक्ट भी नहीं किया गया था मैनेजमेंट की तरफ से. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दुरन कप था वो एक बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था नॉर्थ ईस्ट के लिए, टू टू क्रिएट दैट कॉन्फिडेंस, टू क्रिएट दैट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द प्लेयर्स. और जो फॉरेन प्लेयर्स थे, अगर दुरन कप में हम उनको फॉरेन प्लेयर्स के साथ अगर हम अपनी पूरी फर्स्ट टीम अगर हम खिलाते, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते थे इस आईएसएल सीजन में. और साथ ही साथ परफॉर्मेंस तो ठीक रहता ही होपफुली, प्लस जो फैंस थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कोविड के बाद 2 साल के बाद गुवाहाटी में पहली बार मैच हुआ था, और वो जो मैच हुआ था वो डूरन कप का पहला मतलब मैच था. तो अगर वो डूरन कप अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस दे देते, तो फैंस का मोटिवेशन भी पूरा अप हो जाता इस सीजन के लिए. तो ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था जो कि आई थिंक क्लब हैज मिस दैट अपॉर्चुनिटी. तो ये था हमारा पहला जो गलती, कि डूरन कप में फर्स्ट टीम नहीं खिलाया. और दूसरी बात, जो हमारा आपका जो टीम है, फॉरेन जो प्लेयर्स है, इनका जो साइनिंग था, ये साइनिंग भी थोड़ा लेट किया. और ये लेट होने के कारण इनका जो आपका जो टीम के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग नहीं बन पाया. और वो बॉन्डिंग नहीं बनने के कारण अभी अब देख सकते हैं कि जो टीम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है. और साथ ही साथ अब जैसे देखें कि दूसरा जो टीम्स है, एटीके मोहन बागान हो या फिर आपका बेंगलुरु एफसी हो, हालांकि बेंगलुरु एफसी अब परफॉर्म नहीं दे रहा है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है इतना अच्छा, लेकिन उनके बीच में, उनके प्लेयर्स के बीच में जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो झलकता है. क्योंकि उन्होंने एक जो उनका तो प्री सीजन था, प्री सीजन बहुत ही अच्छा गया. और जैसे कि आप उड़ीसा एफसी को देख सकते हैं, अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी आज उनका मैच भी है. तो ये जो डूरंड कप में इन्होंने अपना जो फर्स्ट टीम खिलाया, तो इनका बेनिफिट इनको अभी इस सीजन में देखने को मिल रहा है. तो ये जो मेरे हिसाब से ये कुछ कारण थे जिसके, अगर ये पहले ही अगर इसको सॉर्ट आउट करते, तो आई थिंक हमारा जो अभी जो कंडीशन है वो बेटर होता. Okay, thank you, Vikas, for your thoughts. I think Ivan, I think has rightly said long-term vision and proper implementation has been lacking in the club. The club needs to be operated by football understanding folks at the helm. I think he's made a very strong point here. And Vikas, I think he has agreed with you. I think this club के जो जो भी बोलता हूँ मैं, अगर मैं कंट्रोवर्शियल पार्ट को अलग भी रख देता हूँ, मैनेजमेंट वो हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में. What we can do is we can suggest the way forward, and we Yeah. have for so that Northeast have a great season ahead, right? At the end of the day, we all want that Northeast to do good at next IELTS season. I think this ये साल तो हो गया. I think it's better आपका
ये साल रेलीगेशन स्टार्ट नहीं हुआ है. रेलीगेशन अगर स्टार्ट हो जाता, इट वुड हैव बीन वेरी, आपके लिए टफ हो जाता, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए, और आप हाईलैंडर्स ब्रिगेड के लिए भी टफ होता, बिकॉज अगर ये साल अगर रेलीगेशन स्टार्ट हो जाता. तो ये एक पार्ट है. सो जो मैं बोल रहा था, एक्चुअली व्हाट ही सेड वाज, डूरांड कप में जो पैशन था गुवाहाटी में, जो आईएसएल में इस बार नहीं दिखा, एकदम नहीं दिखा. आई थिंक फ्रॉम द फर्स्ट मैच, जो पहला मैच में आई थिंक द अटेंडेंस वाज 11,000. ईस्ट बंगाल वाला मैच में कम के 7,000 हुआ, और उसके बाद अभी लास्ट जो मैच था वो 4,000 में आ गया, जो आप लोग केरला के पास हार गए थे, जो वाला मैच था 4,000. आई थिंक द ग्राफ हैज गॉन डाउन, एंड वो एक्सपेक्टेड ही था, seeing the team's performance on field. So before I go to I think अंशुमन को मैं आयुष्मान को मैं ज्यादा पूछ नहीं पाया कुछ. आयुष्मान, अभी आप you can hear me now? Yeah, am I audible? Yeah. Yeah, you're audible. You're audible now. Yeah, sorry for the inconvenience, Good. आयुष्मान, अरे नहीं, आयुष्मान सब कमेंट में तो नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट आयुष्मान सर कब बात करेंगे सब पूछ रहे हैं. तो आयुष्मान सर ने लास्ट में हम लोग को टाइम दिया है. सो थैंक यू आयुष्मान. और आप कहाँ से ज्वाइन किए हो, पहले बताओ आयुष्मान. मैं आपका कोकराझार, आसाम से. तो सुपर्ब. सो 3 लोकेशन से आदमी कनेक्ट किए, जोरहाट से आदमी है, आसाम से है, एंड दिल्ली से भी है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग यार. थैंक्स आयुष्मान फॉर ज्वाइनिंग इन. तो आयुष्मान, व्हाट डू यू थिंक ऑन फील्ड, क्या गलती हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? जैसे उस विकास ने ऑलरेडी बताया है, बट आई थिंक आयुष्मान, एक क्वेश्चन आपके लिए था बेसिकली. तो आप अगर देखो, ऑन फील्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच. आप मतलब हम लोगों ने पहले तो प्री सीजन बहुत लेट स्टार्ट किया, और फिर जब टीम बन रही थी हम ऑप्टिमिस्टिक थे कि हाँ इस सीजन हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, और फैंस का ये एक्सपेक्टेशन यही होता है. मगर जैसे हम लोगों ने देखा कि डूरंड कप में सेकेंड टीम, द रिजर्व टीम वाज पार्टिसिपेटिंग, तो उससे हाँ एक ये रीजन था कि प्लेयर्स को हम आईएसएल के लिए बचा कर रख रहे हैं, इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं तो उनको थोड़ा वो करके रख रहे हैं. लेकिन बस इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि प्लेयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा. तो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठने के कारण आपका पहला गेम हमने खेला बेंगलोर के अगेंस्ट हम ठीक है, we were better in shape as compared to the later on games, but unfortunately वहां पे हुआ क्या, टीम का मोरल बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि वो सिंपल एक रेफरिंग मिस्टेक थी. एंड उसके बाद ग्राफ आपका ऐसे नीचे आया, और टीम के बीच केमिस्ट्री नहीं रही, और आपके इंडियन प्लेयर्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट हाँ कंपेयर किया जाए अगर दूसरे क्लब से, तो या वी लैक द क्वालिटी इन इंडिया प्लेयर्स. तो मेन फैक्टर मेरे हिसाब से वो फाइनल थर्ड था. हम लोगों ने बहुत चांसेस क्रिएट किए, बॉल भी हमारे पास बहुत थी. हम लोगों ने पहले मैच में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 to 12 चांसेस क्रिएट किए, मगर शॉट ऑन टारगेट जस्ट 3 थे. तो उससे होता क्या है आपका, पहले तो हम फाइनल थर्ड पे वी वर नॉट दैट गुड, और जो इंडियन प्लेयर्स, जो क्रिएटिव प्लेयर्स हम बोलना चाहें, क्रिएटिव प्लेयर्स वर नॉट अप टू द मार्क. बस यही था, और फिर धीरे धीरे हम मैचेस हारते गए. तो फिर हाँ सब डिमोटिवेट भी जरूर हुए होंगे, और उससे फिर टीम का ग्राफ नीचे गिरता गया. तो आयुष्मान, कल जा रहे हो आप मैच देखने? हाँ एक्चुअली मेरी क्लास है, मगर मैं सोच रहा हूँ क्लासेस बंद कर कर जाऊंगा. That's great यार, that's great. Because आप यू आर प्लेइंग अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी. हाँ,
हम मेरे को तो डर लग रहा है मतलब Yeah. बिकॉज मुंबई सिटी एफसी ऐसा एक टीम है नहीं किसी को छोड़ नहीं रहा है वो एक मतलब हम मेरे को याद आ रहा है ये एक ऐसा टीम बन गया था याद है पहला जब हम एनएफएल जब नेशनल फुटबॉल लीग हुआ करता था इन द फर्स्ट सीजन आई थिंक जेसीटी जैसा टीम था ना जैसे उसके पास सब प्लेयर्स थे उसके टाइम उस टाइम फर्स्ट टाइम दे वर द चैंपियन आल्सो तो वैसा मेरे को लग रहा है मुंबई सिटी एफसी इस साल काफी डेंजरस टीम है भाई बेस्ट ऑफ लक कल के लिए नहीं आप देखो टीम डेंजरस है लेकिन वो 90 मिनट से मैटर करेंगे ना। अब अगर नॉर्थ ईस्ट अच्छा खेल देती है तब आप यू विल सी द अदर वे अराउंड ना। सो वी आर एक्सपेक्टिंग जापान जर्मनी जैसा कुछ हो जाए या सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना जैसा कुछ हो जाए कल देखिए मैं भी सपोर्ट या करूंगा व्हाई नॉट। आज के शो हाँ के आप बाद भी करना। मैं भी सपोर्ट करूंगा एंड विल कनेक्ट आफ्टर द मैच फोन व्हाट्सएप में हम लोग बात करेंगे इसको लेके बट हाँ हाँ टुमारोज मैच आई थिंक विल बी द टफेस्ट मैच आई थिंक टिल नाउ विल बी द टफेस्ट मैच व्हाट आई या फील इज दैट और आपका मैं देख रहा हूँ आपका जो परफॉर्मेंस है इंदिरा गांधी स्टेडियम में ज्यादा खराब है मैं देखा हूँ आपका जो अवे मैच का जो है ना अवे मैच में जब खेल रहे हो जब मेरे को जो लगा है जब हम कोलकाता में एटी के साथ खेलने आए थे मोहम्मद नान के साथ आप लोग आई थिंक आप अच्छा खेल रहे थे आई थिंक देयर वाज अ चांस मेरे को लग रहा था एक टाइम था हमको लग रहा था जीत भी सकते हो आप देयर वाज अ स्पेल ऑफ द गेम जैसे सऊदी ने उस दिन स्पेल लाया 10 मिनट का वैसा भी आप लोग को एक स्पेल आया था उस दिन एंड आप लोग जीत सकते 2 मैच मैंने उससे शो से पहले आप ही के एक दोस्त अमन बोल के हैं ही इज आल्सो पार्ट ऑफ हाईलैंडर ब्रिगेड उनसे बात किया था वो मेरे को बोले थे दादा इट विल बी अगर 2-0 भी होता है दैट इज अ गुड रिजल्ट बट द मैच आप लोग ने जो खेला था आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आई थिंक आफ्टर बेंगलुरु एनी मैच व्हिच कम्स क्लोज वाज दैट गेम एंड अवे में आप लोग अच्छा खेलते हो और कल फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप लोग का गेम है तो यही मेरे को ज्यादा चिंता दे रहा है बिकॉज इंदिरा गांधी स्टेडियम में पता नहीं होम ग्राउंड आपका और ईस्ट बंगाल का एकदम सेम चल रहा है एकदम ईस्ट बंगाल क्लब भी अवे मैच हार रही जीत रही है और होम मैच हार रही है तो मेरे को लग रहा है ऐसे ही पटरी चल रहा है दोनों क्लब का तुमको क्या लग रहा है अंशुमन नहीं क्या लग रहा है नहीं होम अवे एक फैक्टर है लेकिन आपने जैसे बोला ना सऊदी सऊदी के गेम में आपने देखा वो जो 90 मिनट्स के अंदर आपका 30 to 40 मिनट्स जो आपके अंडर रहते हैं उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करो तो आपका होम या अवे उतना फैक्टर प्ले नहीं करता। एकदम करेक्ट सही बोले करेक्ट बट समहाउ आई फील ये वर्ल्ड कप काफी हम लोग को सिखा भी रहा है दैट स्मॉल टीम्स कैन डू वंडर एंड इन इंडियन फुटबॉल का मैं बात करूं देखिए इंडियन प्लेयर का डिफरेंस ज्यादा है नहीं इफ आई सी अगर मैं आई लीग आप अगर फॉलो कर रहे हो आप देखे होंगे आई लीग का नेशनल आई लीग के जो प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं ऑफ इंडियन नेशनलिटी के उनके साथ अगर मैं आईएसएल का जो इंडियन नेशनल टीम नेशनल लीग पे खेल रहा है टीम आईएसएल के नेशनल लेवल के प्लेयर्स में ज्यादा अंतर मेरे को तो नहीं दिखा अभी तक इफ यू हैव सीन आई लीग गेम्स मैंने इस साल मैंने 2-3 आई लीग गेम्स दिखा है फॉरेनर्स हाँ डिफरेंसेस है नो डाउट देयर इज हेल एंड हेवन डिफरेंस उस दिन में आजवाल और आई थिंक सुदेवा का एक मैच चल रहा था आई वाज वाचिंग दैट गेम इट वाज अ वंडरफुल गेम I think I think this year Eurosports is doing a great job by telecasting it, and I think more people should watch these games there. तो एक चांस तो आपका बनता है कल अगर आपने कुछ कर दिया तो इट विल बी अ ग्रेट स्टेटमेंट एक्चुअली फिर आपके फैंस भी आने स्टार्ट कर देंगे स्टेडियम में और फिर एक इट्स अ मैटर ऑफ वन गेम बेसिकली भाई एक गेम का बात है एंड आपके कोच का भी मैं एक दिन इंटरव्यू पढ़ रहा था व्हेन ही वाज इन कोलकाता and he said in one of the interviews in Kolkata that see our job is very much clear उनको और एक चीज आपका कोच का शायद हाईएस्ट रेड कार्ड है अभी तक कोई प्लेयर्स का भी इतना रेड कार्ड नहीं खा गया आपके कोच ने जितना खाया इस बार आईएसएल ये भी एक ट्रिविया है आपका ठीक है so when he was in Kolkata he said a very good point I think I liked his point there he said that we are here to prove a point that will play according to our plans I know we have limited resources but we have to deliver result with the limited resources we have and that is said by a good professional only can say like this he's not saying that मैं नहीं कर पाऊंगा भाई मेरा टीम में हाथ में कुछ नहीं फॉरेनर्स आता है उसको आप मैं बोल देता हूँ उसको आप ओयो रूम में ठहला देते हो और वो छोड़ के चला जाता है ठीक है
ऐसा नहीं है, मतलब he was very, I liked his way, his approach, and I think एक चीज मेरे को अच्छा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट के बारे में इस बार, उनके आपके जो अपने कोच, मैं आप रिकी हर्बर्ट का टाइम का भी बात मैं अगर बोलता हूँ, उसके बाद आपने आया था रॉबर्ट जर्नी को, आपने सब हर टाइम अच्छे अच्छे कोचेस को लाए हैं हमारे इंडियन सर्किट में, इंडियन सुपर लीग में। आई थिंक आपकी जैसे शायद बहुत कम क्लब्स होंगे जो लाए होंगे इतना अच्छा लेवल के कोच। आई थिंक जो आपके लास्ट कोच थे रॉबर्ट जर्नी थे ना, उससे पहले फॉरेन कोच उससे पहले तो वही थे, वो भी क्रोएशियन नेशनल टीम के प्लेयर ही थे। हमारे जो प्रेजेंट नेशनल टीम के कोच थे, दे वर प्लेयर, दे प्लेड टुगेदर आल्सो, ईगोस्टी मैच के दे वर द बैचमेट्स थे। सो वही द थिंग व्हाट आई वांट टू से इज दैट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ऑन फील्ड जो भी चले, आई थिंक यहाँ पर बहुत लोगों ने लिखा है दैट टेकिंग डुरैंड वाज द बिगेस्ट ब्लंडर कैजुअली। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट मेड बाय इवान। सो मेरे को भी लगा आप लोग ने कुछ गलती किया है। सो मानस, व्हाट्स लार्जर इन द लार्जर पिक्चर, व्हाट डू यू थिंक, मींस एकेडमीज नहीं बन रहे हैं, आप लोग को एकेडमी में तो फोकस कर सकते थे, आप लोग एकेडमीज बना Yeah, सकते yeah. थे, बिकॉज आपका सप्लाई लाइन ही हम लोग का सप्लाई लाइन है। अभी तो हम लोग सोचते ही नहीं है, कोलकाता में तो हम लोग सोचते ही नहीं है कोई हमारा कोई कोलकाता का कोई बंदा खेलेगा। हम लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से ही आदमी लाके हम लोग खिलाते हैं, गोवन होते हैं, नहीं तो आपके वहां से आते हैं। सो Exactly. जो टैलेंट पूल है वो कैप्चर नहीं हो रहा है। तो इट्स ओवर टू यू मानस, आई थिंक you would have some points to share on this, please. Yeah, exactly. To focus on whatever Ivan also mentioned in the comments and what you guys are also discussing, the main problem of the team has been there has been no long-term project. A long-term project is non-existent for the club. You know, the footballing philosophy or the style of play has been the antithesis to what the club has always stood for. And the main reason has always been, you know, the lack of continuation with a particular coach. You know, if you look at successful clubs around the world, like Liverpool in the gegenpressing or Barcelona with a particular brand of football, or closer home, Sergio Lobera's Goa, or before the merger ATK, they had a particular brand of football and they have a particular style of play. And with that play and with that in mind, they used to go to the market and bring in players that used to suit their style. If you remember last year, where we defeated Mumbai City FC twice, where they were performing very well. That season, where Gerardnos was coaching, he had a particular defensive structure of play, if you guys remember, and we used to go on counter attacks and score goals. Then with that band of players, he wasn't getting results and he was sacked, and Khalid Jamil took over. With the same band of players, he played a quick passing build-up play and results flow. So, like, quite surprisingly, it always wondered me, like, if you have these players and they are suited to play this style, why we are playing this style of football? So this non-continuation with the manager and the management's impatience with giving more time to the coaches or to the particular band of players has always been a major problem. So we also brought in Elko Shatori and he left under very mysterious circumstances, I would say. And also during the Khalid Jamil first season, we got, I would say, lucky that we used to figure out in quick succession what happened. So if you look at modern football, stability and patience with a particular management has been crucial. That's been also shown by Arteta's Arsenal. So we have to be patient with the management, give them a couple of seasons to implement their ideas, to implement their style of play, then go to the market and bring in players that suit the style. That's the first problem with the lack of structure and long-term project. And like you said, recently the RFDL that happened for the youth league. Northeast United FC I think is one of the very few teams in the league that has not sent a team, and eventually Bengaluru won. And if you look at how Bengaluru FC is being run, players after players come through their academy ranks. Many of my friends from back in Guwahati are also playing for the academy. Back game after year after year, they used to produce players and they used to play for the first team. Now, what is happening in the Northeast, although we have a tremendous pool of players, although they are unfurnished and unrefined, because of this lack of structure in an academy that we have, we are not able to furnish and refurbish those players for a better league. And also, Highlander Brigade has also pointed out this in one of our demands, is that although it's also FIFA's under guidelines, we also lack a well-functioning women's team. So that's also one of the issues. So yeah, that sums up both of the things that you asked.
मानस, आपका आई टोटली एग्री विथ यू एंड और आपका जो पॉइंट था एकदम मतलब एकदम टू द पॉइंट आपने बात किया. बट डोंट यू think that one of the I think spectator also commented here that John Abraham is a जो हम मेरे को लगा है he has been a मतलब फुटबॉल लवर है, तो बोलते तो है एटलीस्ट, करते कितना पता नहीं बट बोलते तो है he is a football lover. And मैं upfront बता रहा हूँ because see at end of the day he has owned the club. I think आपको नहीं लगता, मेरे को जो लग रहा है that the Northeast United club should have gone to a better corporate house. I think for the better result. Because देखिए जो Exactly. विकास ने बोला एक पॉइंट, विकास ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, प्रॉफिटेबिलिटी एंड बैलेंस शीट टाल मटाल नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी ऑन द लेवल. एंड आई एम ऑल्सो अग्रीइंग दैट बिजनेस के बिना फुटबॉल पॉसिबल नहीं है. सब पैसा बनाने ही आते हैं यहाँ पर, एकदम 100% बात है. सो अगर मैं मॉड्यूल का बता दूं, जैसे आप एटी के मोहन बगान 80 करोड़ साल में इन्वेस्ट कर रहे हैं. they are also into losses. मिस्टर गोयनका has said that वो लॉस कर ही रहे हैं. मगर जॉन अब्राहम का जो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उनको तो इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे. ही इज इन्वेस्टिंग अ वेरी मीगर अमाउंट. लॉसेस भी कितने होंगे ज्यादा आपके. आपका जो फैन क्लब है, आप तो गेट मनी से पैसा उठा लोगे. आपका जो फैन क्लब है, और आपका फैन क्लब मैं बता दूं, कोलकाता में जैसे डर्बी मैच के लिए ही भीड़ होता है ज्यादा, नॉन डर्बी में भीड़ कम हो जाता है. फैक्ट बात है. ये शाम का टाइम बोल के ये बोल देते हैं हमको, रात में गेम पड़ गया, मैच में नहीं जा पाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे. कोलकाता में ये होता है, फैक्ट बात है. बट व्हाट आई हैव सीन इन केरला आल्सो, एंड आपके वहां पर भी मैं देखा हूं, अगर नॉन डर्बी मैच में भी जैसे एवरेज क्राउड 20-25 हजार का आपका होता था एक टाइम, जो मैंने देखा है आपका. तो जॉन अब्राहम की जगह पे क्या बेटर आदमी के पास जाना चाहिए था. और आप लोग का फंक्शनिंग का क्या है, मतलब आप लोग कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो इसको लेके, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ लॉन्ग थिंग. मतलब 10 साल काफी साल हो जाते हैं अभी यार. पता नहीं 10 साल बाद जॉन रहेंगे कि नहीं, बट पर देखते हैं क्या होता है. इट्स ऑल ओवर टू यू नाउ प्लीज. Yeah, okay. Just what you have mentioned, I remember in the early seasons in Guwahati, when before the under 17 World Cup, the capacity was 35,000 of a home stadium. And it was almost impossible to get a home ticket for those matches. So, like, the craze for football is there. And losses, if we focus on the ticket sales and the merchandise sales, it could have been a very profitable club. So why does this problem arise? If you look at the top of the hierarchy in how the club is being run, there is a lack of transparency and there is a lack of accountability. As you have already mentioned, many clubs, many franchises, they're corporate owned. So John Abraham and whoever is running the clubs should not be named here, like whoever is taking the decisions in John's name, they're clearly not doing a good work. And it becomes difficult in the modern game to compete with the corporate firms. I do not know how John's movies are functioning in the box office or how they are giving him returns, or I do not know, have any idea about that. But if you look at the top of the iceberg of how the club is being run, there has always been a lack of transparency. And recently, if you have followed, 2 months ago, reports came up that the club is up for investors, and he has valued the club at 300 crores. But if the club doesn't perform, if you cannot show the investors that there is a potential in which the club could be made profitable, why would they come from? Like, so this vicious cycle continues. Yeah. मानस वन पॉइंट, मानस एक इम्पोर्टेंट चीज, इज इट करेक्ट आपने जो बोला 300 करोड़ का कुछ मिला है क्या आप लोग को इन्वेस्टर? आई वाज नॉट अवेयर ऑफ Reports, इट. ये चीज एक yeah, reports. व्हाट We वाज द did not रिपोर्ट? get the investors. The report said that John Abraham has, valued the club at 300 crores for investments. It has been open to investors, and he has valued the club at 300 crores for investment. So, like, एक्चुअली that's 10 साल not खत्म होने को है ना 2024 में. exactly, and 10 that's साल not a खत्म huge होने को है amount आई for थिंक. a no. That's not a. He was welcoming investors to co-partner him. So, like, that's not a huge amount for a club like Northeast United FC. If you pull the potential of the club, I think it should be valued at 600 crores. That's what I feel like. So, yeah. 100%, 100%, totally agreed. अरित का कुछ पॉइंट, अरित प्लीज. Arit, you are muted. You are muted, Arit. Yeah, sorry, extremely sorry. I think very good analysis by Manas here. So just one point, I think I just differ a bit what he said. So just wanted to get it clarified.
So he's saying that a club like Northeast, yes, definitely agree it's not valued at 300 crores. It's one of the hotbed of opportunities. So in that way, Manas, you're saying that why would investors come up, because कोई performance नहीं है. Last 7 साल 8 साल या 10 साल only 2 बार playoff जा चुका है. But I think performance तभी होगा जब proper team होगा, proper structure होगा, जो हम लोग बात किया. But don't you think supporters, fan base or region is one of the main criteria for the investors to come in? Because this is one of the hotbeds. Don't you think that is the biggest motivation for someone coming in? Exactly. I think there has been a bit of miscommunication among us. I said, like, since this is not happening and the other things are also not collaborating with this, the vicious cycle has continued. I agree your point. So it has been continuing because of that. Yeah. Got it. Good. Absolutely. Thanks, Manas, for clarifying. Thanks. So Manas, ये मतलब आप लोग कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हो क्या? मतलब what is the way forward? Highlander Brigade का मतलब क्या है? Because मैं लास्ट मैच मैं कोलकाता से one of my friends traveled, Anirban. He's a East Bengal supporter and he traveled to Guwahati and वो बोल रहा था Highlander Brigade तो वो बंगाली में बोल रहा था मेरे को एखोनो আসছে এত খারাপ খেলছে এখন मतलब बोल रहा इतना खराब खेलने के बाद भी आ रहा आदमी देखने. And what he said to me was the passion. Boli, please. Yeah, Manas. So we are not we are a supporters club. So we are not for the management. We are for the team. So we have always shown our displeasure towards the team, towards their wrong decisions. And if you have followed the Durand Cup, we have made some quite comical and as well as quite very provocative remarks towards what's being wrong at the top level and complaining against what they had been doing. I think Vikas is at a better spot to highlight what we plan because he has been a senior member for the brigade. So Vikas, why don't you enlighten us on this? Yeah, Vikas, बताओ please. Yeah, as I said earlier, हमारा जो प्रॉब्लम्स है जो कि दुरन कप के पहले से ही जो स्टार्ट हुआ था, तो ये जितना भी इश्यूज चल रहा था हमारे इनसाइड द मैनेजमेंट, तो ये हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड. सो हमने ये स्टार्टिंग से मतलब ये हमारा जो मैसेज है हम कन्वे करने को ट्राई कर रहे थे कि जो भी ये इश्यूज है एटलीस्ट मैनेजमेंट इसके ऊपर ध्यान दे. और लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और इसके कारण हमें ऐसे कुछ प्रोटेस्ट करना पड़ा. और ये जो प्रोटेस्ट थे, इट इज़ नॉट अ वेरी एग्रेसिव प्रोटेस्ट बट इट इज़ अ काइंड ऑफ like to convey the message in a way so that they can understand our intention, like how do we love the club, because this club is like our ये जो क्लब है इसके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो सिर्फ ऐसा ये नहीं है कि ये क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है तो हम कनेक्टेड है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज समथिंग दैट वी कैन फील दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग our region in front of all the world. So we feel somewhere connected to this club. That's why we want that they should understand the feeling of our fans, and that's why we do these kind of protests. So हमने जो प्रोटेस्ट किया था ये काइंड ऑफ हमने एक बैनर हमने जो डिस्प्ले किया था ड्यूरिंग द डूरन कप मैचेस where it is clearly written that 8 years is not enough. Like 8 years. I just forgot the line actually. Manas, can you help me to remember that? Yeah, it was 8 years and is enough to get serious. Yes. That was the our line. Wow line, तो wow line ये है. I think even yeah, exactly. In fact, जावेद अख्तर साहब भी खुश हो जाएंगे ये जो लाइन आपने लिखा है. मतलब I think तो इसी तरीके से कुछ तो इसी तरीके से कुछ हमने प्रोटेस्ट और भी बैनर्स हमने डिस्प्ले किया था. I don't know whether they have seen them or seen these or not, but उसका कोई रिजल्ट तो हमें दिखा नहीं क्योंकि मैनेजमेंट को जो करना था उन्होंने वो किया. डूरन कप में हमारे जो प्लेयर्स है उनको मेन जो टीम है उनको नहीं खिलाया. प्री सीजन जो पूरा अपॉर्चुनिटी था वो पूरा मिस किया. जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनका साइनिंग लेट हुआ. तो इन्हीं चीजों के कारण हमारा जो परफॉर्मेंस है आज इतना डाउन गया है.
लेकिन मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहता हूँ कि अभी सिर्फ 6 मैचेस ही हुए हैं, तो अगर अभी भी चांसेस है, अगर यहाँ पे कमबैक करता है नॉर्थ ईस्ट, तो वी हैव इनफ मैचेस to qualify to the playoffs, because this time we have top 6. 6. So yeah, so I think we have still chances to qualify to the playoffs. And अगर अभी मैनेजमेंट कुछ प्लेयर्स अगर साइन करता है, ओके, सो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट इस सीजन क्वालिफाई कर सकता है, और होपफुली अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो मे बी वी कैन ऑल्सो विन द कप। एंड आई एम ऑलवेज मैं हमेशा इसे यही मानता हूँ कि टीम को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, बिकॉज एज मानस सेड दैट वी आर विद द टीम, नॉट विद द मैनेजमेंट। सो चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस हो, हम एज ए हाईलैंडर ब्रिगेड we will always be there to support the team, to support the players, no matters whatever the situation, right? So हम तो रहेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करे, और साथ ही साथ मैनेजमेंट एटलीस्ट जो फैंस का जो इंटेंशन है, जो फैंस चाहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, और उसी के हिसाब से बाकी का जितना सीजन है उसको कंटिन्यू करे। Yeah, and just to add to what Vikas has said, the Highlander Brigade has also given an open letter to the management. I don't think when they will wake up from the slumber and read it, and we haven't got a reply of that very public letter stating our grievances against the management and how poorly the club is being run. So it's not a good scene to have, with the management and the fans. Yeah. So I think This Vikas this ने जो बोला, so just one question based on Hmm. that. So I think I absolutely agree with Vikas कि अभी भी टाइम है, 6 मैच हुआ है, क्योंकि इस बार 6 टीम क्वालिफाई कर रहा है, इट्स नॉट 4, so there is still a chance, सीजन अभी बहुत लंबा बाकी है। So what do you think एक मेजर चेंज आना चाहिए, जनवरी ट्रांसफर विंडो आ रहा है 1 महीने में, तो what do you think is the major change आना चाहिए that will help Northeast to attain that top 6? So do you think like lack of quality foreigners is one issue where Northeast is struggling, like lack of a quality goal scorer? तो क्या चेंज करना चाहिए Northeast को? मानस, So, can you go? yeah. So basically, we have seen just in the evening before we have started this live podcast. So our coach, he gave the interview and he clearly stated that we will sign 4 to 5 players in the January upcoming transfer window, and because of the lack of whatever the debacle and the drama that happened with Sylvester, we surely and clearly lack a foreign striker. So. And we have gone to cash in with Wilma. I don't think he is fit enough to play because he has been absent in the footballing circuit for 2 months. Correct. In that, we would like to add a more creative spark, maybe in the form of an Indian player or maybe in the foreign player who could create goal scoring chances. Like we are really missing Gallego, and we have also made a banner, no Gallego, no party, and it's really coming up to be true. So. We missed of that creative part, and I think the team is in the last match we also saw that the team clearly has potential, and when not and there is a fine line of difference between getting results and getting points. So if certain things could be put into place when we have got a good break from the last match, and if I know they have been doing hard work behind the doors, so if those things fall into place, I think results will surely follow. And it's football is at the end very simple game, right? You just have to put the ball behind the goal. So if we are able to score the goals, which we are clearly not, I think results will follow. Yeah, sure. Exactly, and I think exactly that is where I think Derbyshire is struggling. I think he is a good striker. He has a good history, but somewhere he's not able to find the net. I think if you remember, I think the easiest chance he missed was against East Bengal just before the lemon break. If that game could have been 1-1, we could have seen a different result. He just had to slot that ball. So I think these are the small things. I think if these are rectified, I think we can see Northeast coming up the table. अरे वो मैच And तो ईस्ट exactly. बंगाल को जीतने दो यार, एटलीस्ट एक ही तो मैच जीता, 2 ही मैच जीता है, वो भी आप And exactly, when Khalid Jamil took over, we had a spree of matches. That season, the situation was also the same. We were losing match after match under Gerard Knows. And when Khalid Jamil took over,
there was a streak of matches that we performed well and we won, and the whole environment surrounding the club and how we viewed the team changed. I think in this season we have a greater chance because there are six teams qualifying again to reinstate the point. And if we are able to get a string of successive good results, yeah, who knows where we could end up. Yeah, we are really hopeful. And I just can't stop asking this question. I just can't stop. So can we like hope that Gallagher is coming back? Like he's currently playing for Uruguay. I think he's one of the best players to have played in ISL. I think he's a North Street heartthrob. So do we see any chance of him coming back? Hopefully, we'll again see him wearing our jersey, but yeah, who knows? It's football, man. Like, yeah, He's we are even my hopeful that he favorite comes player. back. Yeah. He's outstanding. And He's just outstanding player. he's very much interested to come back, actually. Okay. Exactly. Okay. Yeah. Yeah, So Shayan. we'll take a question, right? We'll Yeah. take a question now, everybody. Actually, fans are pouring in more questions now. I think many questions have already lined up. I think Ashirwad has a point. Ashirwad says that I think in terms of investment, current scenario takes a back seat and more focus is usually on the future and potential. Example he has said is Newcastle United. I think the way project is projected matters a lot. I think we have discussed already in the show Exactly. that long-term vision is somewhere is missing. What I think Manas already said, I think with the first point, and Vikas also highlighted this. So this is a thing I think Northeast is having this problem, and some basic things are missing in the club. I don't think why this club is getting proper license to play in ISL, because if I see the AFC guidelines, many of the points are missing by this club. Many of the points, like I think the team doesn't have a women's club team, right? I think AFC guidelines says that it has to have any club has to have a women's team. I think club is not having that. First of all, I think junior team is there or not, ये आप बता पाओगे, because Yeah, हम yeah. लोग को कुछ पता नहीं चलता यहाँ पर है junior No, team. yeah, we do. Yeah, we do have a reserve and a junior team, and they won the GCA C division, and that team played in the Durand Cup and not the Final Cup. So that was the team that you saw played in the Durand Cup. Okay. So there is another question. ये तो lack of vision का बहुत question आ रहा है. सब बोल रहे हैं पुराने प्लेयर आ जाए, बोर्जेस आ जाए, अपुया आ जाए, कमारा आ जाए. आ जाना से तो हम लोग सब मान ही सकते हैं, सब आ जाओ और जीत लो कप. ऐसा तो होगा नहीं, because it's a battlefield. एंड अगर आप ट्रांसफर मार्केट देखो, आई थिंक सब टीम प्रिपेयर करना ऑलरेडी स्टार्टेड. If I was previously I was in a talk with one of the Mumbai City FC. I know one of person who is involved in Mumbai City FC. They have already made a plan. He's part of the City group, and they already made the plan for the next year. The way they are thinking, I think every club should learn. Means, if you see Hyderabad also, Hyderabad doesn't have a great names in their team. They don't have great names. But the club is managed so nicely. I think they have made their own. आपको पता है ना, आप लोग को, I think it was shared also. I think Mr. Kalyan Chauve went also. They have made their own practice stadium right now. Practice ground खुद से बनाया है. In 3-4 साल में, if they can do, why not Northeast United, right? वो तो कुछ ना कुछ तो गलत है. तो मैं आयुष्मान का ज्यादा, आई थिंक आयुष्मान का बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट पब्लिक डिमांड आयुष्मान को लेके है, दैट पब्लिक डिमांड यहाँ पर करिए, आयुष्मान सर कुछ बोले, बिकॉज यहाँ पर सब बोल रहे हैं आयुष्मान कुछ तो बोलो मैनेजमेंट के बारे में. तो आयुष्मान, तो आपको क्या लग रहा है आयुष्मान, दैट वे फॉरवर्ड, जैसे अभी विकास ने एक बहुत पॉजिटिव बात बोला, दैट जस्ट दिस टाइम 6 टीम क्वालिफाई कर सकते हैं. प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं, द चांसेस अभी भी है, ऐसा कोई बात नहीं है. एक यू जस्ट नीड वन विन, एक जीत, और वो कल भी हो सकता है. कल आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में कुछ मैजिक कर दो और आप चले जाओ कल आयुष्मान मैच देखने, कुछ ना कुछ हो जाएगा कल, लग रहा है. हम लोग का डिस्कशन के बाद हमको लग रहा है कुछ. आई थिंक दिस इज समथिंग, जो टीम लास्ट में है, वो टीम अगर मुंबई सिटी एफसी को हरा देता है, दैट वुड मेक अ बिग स्टेटमेंट. आई थिंक कल अगर हो जाता है ऐसा कुछ, आई थिंक आप लोग के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं रहेगा. दैट विल बी द बिगेस्ट मोटिवेशन. तो आयुष्मान, ओवर टू यू. या आपने जैसे बोला ना कि जस्ट एक गेम का डिफरेंस है, शायद वो गेम कल हो जाए, क्योंकि आप देखो हम लोग को जस्ट एक पुश चाहिए, एक पुश और हम आगे निकल जाएंगे. जैसे कि आपने सुना ही होगा, मतलब मानस भैया ने भी मेंशन किया था, अंडर खालिद जमील हम लोग हार रहे थे स्टार्टिंग में, वी वेर नॉट दैट गुड,
बट हाँ, एक प्रॉपर टीम रेडी हो गई थी अंडर जेरार्ड नूस। बट क्या हुआ, खालिद जमील ने टेक ओवर किया और जस्ट वो एक गेम आपका अच्छे से निकला, देन एवरीथिंग चेंज फ्रॉम देयर ना। वी वेर लाइक द डार्क हॉर्सेस ऑफ द लीग, वी चेंज एवरीथिंग। सो मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल हम चेंज करें सब कुछ और आगे निकल रहे हैं। तो आप जा रहे हो आयुष्मान, कल आप जा रहे हो फिर? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा आपको। So I'll go to Vikas now. Vikas, जैसे मानस से बात हुआ, अभी आयुष्मान ने भी अपना थॉट्स दिया है. What do you think of the rest of the matches right now? I think आप लोग का शायद 4 गेम और बाकी है फर्स्ट लेग में, right? 4 games are left. If I'm not mistaken, there are 4 games left, including tomorrow's match. So next 4 games, what would be the plan of Mr. Bulbul का? क्या लगेगा? What he has? वो क्या सोच रहे होंगे? आपको क्या लगता है कितने पॉइंट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे लास्ट 4 गेम्स में टू इवन थिंक ऑफ क्वालिफाइंग फॉर द प्लेऑफ्स? Okay. I think if we're talking about the next 4 matches, I think at least 2 draws, 1 win, and 1 loss is expected. Then I think that will be a motivation will come, because suddenly ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे मैचेस लगातार जीतने लग जाए. इट मे बी या अगर मुंबई के साथ अगर हम ड्रॉ भी कर देते हैं तो इट्स अ वेरी गुड sign for the team. So yeah, I am expecting a draw from tomorrow's match, and after then at least one in 4 मैचेस में से एटलीस्ट एक विन तो नेसेसरी है to to up the morale of the team. सो कल कितना फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हो? वर्ल्ड कप फीवर में कितना आदमी कल जाएंगे गुवाहाटी में मैच देखने? कल तो आई थिंक बहुत कम होने वाला है. I'm not expecting I'm not expecting like 8,000 9,000. सही रहेगा. 8,000 भी नहीं होगा आपको लग रहा है? But definitely Highlander Brigade will definitely go and support the team. और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, Highlander Brigade हमेशा हाँ प्लीज 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 प्लीज. ओके. सो जैसा कि मैंने बोला, Highlander Brigade हमेशा रहेगा चाहे कैसा भी परफॉर्मेंस हो. लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट का नेक्स्ट जितने भी मैचेस है वो अच्छे से खेले और अच्छा परफॉर्मेंस दे अपने फैंस के लिए. और इससे ना ही टीम का मोरल अप होगा, साथ ही साथ जो हमारे फैंस है वो भी जो चाहते हैं अपनी टीम की तरफ से, क्योंकि सबका एक एम्बिशन है कि कप जीते, एटलीस्ट क्वालिफाई करे टू द फाइनल्स. तो या अगर अच्छा खेले तो सबके लिए अच्छा रहेगा. वी हैव अ न्यू गेस्ट अनिर्बन. अनिर्बन आप लोग का बहुत बड़ा फैन है कोलकाता में. ही सपोर्ट्स योर क्लब अ लॉट. एंड आप लोग जब हम लोग लास्ट शो किए थे मोहन बागान, और अनिर्बन का फर्स्ट क्लब तो है, मोहन बागान का सपोर्टर है, एटी के मोहन बागान का. बट समटाइम्स व्हाट ही मतलब वो काफी नॉर्थ ईस्ट को चाहता था. मेरे को पूछ रहा था कब ये शो होगा. तो अनिर्बन आज ऑफिस से थोड़ा लेट हो गया, ऑफिस से आने को. Anirban has just joined. Anirban, to introduce you is Manas, Vikas, and Ayushman are both from Highlander Brigade who are present here. And thanks to Pawan also, who played a very key role in organizing this event. So, Anirban, any thoughts? आपका कुछ question इन तीनों को कुछ? Sharon, good evening to everyone. I just got a bit late. Sorry for that. My question to Highlander Brigade is that they presently Northeast is in the bottom of the table. They haven't won any game in this ISL. So, what do you all think? What's the problem with this team in Northeast?
There are so many talented players in this team. So what is the problem behind it? Is there something management problem, or is there something anything else going on? What do you अनिर्बन think? अनिर्बन In performance review. अनिर्बन वो रिकास्ट में तुम देख लेना, क्योंकि Okay, 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 ये okay, मैनेजमेंट को okay. लेके हम Already. लोग 1 घंटे लेके इतना बात पॉइंट बोल Okay, चुके हैं ना, okay, okay, आई okay, थिंक okay. Sorry, जॉन sorry. एब्राहम आज रात को सो नहीं Actually, पाएगा. okay, okay, okay. No, no, नहीं नहीं actually. नहीं नहीं, तुम अपना पॉइंट में सही हो. नहीं नहीं सही हो. नहीं एक्चुअली बेसिकली अनिर्बन अभी हम वी वर डिस्कसिंग द वे फॉरवर्ड नाउ. जो हो गया अभी, यू कांट चेंज थिंग्स. जो हो गया सीजन में पहला 6 मैच निकल चुका है. अभी हाथ में मेरे पास कितने मैचेस है, मैं वही बोल रहा था 4 मैचेस एंड 10 मैच, 14 मैचेस अभी भी है. 4 matches So in the अगर मैं first week. Yeah. प्रैक्टिकली Yes. बात, हाँ 4 मैच और सेकंड लेग में 10 Next मैच week, है, तो 10 14 matches. मैचेस टोटल है. Yes. हाँ तो 10 एंड 4 मैचेस अगर है, तो अगर 20 मैचेस का मैं लीग पकड़ता हूँ, आई थिंक 70% ऑफ द लीग इज टिल देयर. 20 मैच का लीग Yes. में ओनली 30% खेला हुआ है अभी. अब हम लोग अभी भी बोलते हैं ना चांस है कि नॉर्थ अभी ईस्ट का. टॉप 6 में जाने का. वो विकास ने एक अच्छा पॉइंट बोला था, दिस अ मैटर ऑफ वन सिंगल गेम एंड टुमारो कैन बी दैट डे. एक Yes. मैच अगर निकल जाए तो वो हम लोग वी आर डिस्कसिंग ऑन दैट पेज. uneven any question to them because they are there and they are supporting their club in this tough time also. I think जितना भी Yes. बोले कम, आई थिंक जितना भी मैं बोल लूं बहुत कम है. आप तीनों का फुटबॉल के बारे में आप लोग ने जो इन डिटेलिंग में हम लोग को बताया, वी वर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स जो आप लोग ने बताया एंड व्हाट द प्लान अहेड. तो अनिर्बन एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग इट? हम लोग एक्चुअली ऑलरेडी 1 घंटा कर चुके हैं, हम लोग ओवर टाइम चल रहे हैं, तो Okay. और वी नीड टू Okay. कलेक्टिवली क्लोज इट इन अ वेरी गुड वे. तो आप No, प्लीज बताओ. मेरा एक क्वेश्चन है जो हाईलैंडर ब्रिगेड को, तो आप यहाँ से टीम को कहाँ देख रहे हैं? अभी भी 14 मैच बाकी है. So are you hoping that is Northeast have the chance to finish in top 6? Exactly, you know, the ideal situation would be taking all the 42 points available from the remaining 14 matches, right? But yeah, if again to get in the top 6, you did not need 42 points. So we are really hopeful, and it's just a matter of one single game or a few twists and turns in the tactical aspect of the game, or changing the formations, or bringing in new players from the January transfer window. And yeah, we could go on a spree of winning matches and win everything this season. So yeah, we are very hopeful. But again, we are aware of all the, realistically speaking, all the aware of the problems that is going on off the field, on the field. So I think to expect a good season or to qualify for the round-offs, or the knockouts would be a good season for us. Yeah. I think Northeast had the talent, enough talent to finish in the top 6 from here on Yeah, also. exactly. Yeah, we do have the talent, and you are also asking about the attendance, right? I cannot guarantee you for the whole attendance, but the Highlander Brigade in the Southeast stand will always be loud and proud, since we are like till Northeast United FC exists. So yeah, we'll be there. Yes. Yes. अच्छा एक चीज मेरे Keep your को spirits बताओ high. विकास. नहीं राइट विकास एंड एवरीबडी हियर, मानस एंड आयुष्मान ऑल्सो. तो मेरे को एक चीज जो चीज स्ट्राइकिंग लग रहा है, मैं उस दिन आप लोग को बुक माई शो आपका पार्टनर है शायद इस बार आईएसएल में, राइट? हर साल शायद वही रहता है, बुक माई शो आपका टिकटिंग पार्टनर है आईएसएल में. तो आई वाज चेकिंग अ डेटा देयर दैट आपका जो टिकट प्राइस किया है एनयूएफसी मैनेजमेंट में, आपका कोई अच्छा प्लेयर तो लाया नहीं, राइट? कोलकाता में हम लोग ने, मैं फैक्ट बात बता रहा हूँ, इफ यू सी द बिग टू क्लब्स ऑफ कोलकाता, मींस सो कॉल्ड बिग टू क्लब्स, सो कॉल्ड बिग टू क्लब्स में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दोनों क्लब का लास्ट 2-3 साल का परफॉर्मेंस देखो, दे हैव नॉट वॉन एनीथिंग, राइट? तो सो कॉल्ड बिग क्लब्स में का टिकट रेट स्टार्टिंग फॉर 50 रुपीज, एंड आप लोग का शायद मिनिमम टिकट शायद 200 रुपया का है अभी, 200 रुपीज. ये क्या एक फैक्टर काम कर रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट हैविंग अ लॉन्गर विजन. जो कम टिकट बेच के हम लोग स्टेडियम को भराए, पहला ये चीज करना चाहिए जो आइजॉल ने किया था. आपको याद होगा आइजॉल का जो ड्रीम रन था 100 खालिद जामिल, उसने जो किया था, उन्होंने टिकट प्राइस एकदम नॉमिनल रखा था, एंड एवरी मैच ऑफ आइजॉल वाज पैक्ड हाउस होता था. और उसमें द ट्रैवलिंग टीम को ना थोड़ा दिक्कत आता था, बहुत सारा दिक्कत आता था.
बट अभी क्या हो रहा है, आप लोग का स्टेडियम खाली रहता और आपका जो स्टेडियम है, अगर मैं बोलूं साइज वाइज, दोनों साइड से जैसे ह्यूज स्पेस, मतलब इट्स अ ट्रैक फील्ड है साथ में, तो आपका सब फैंस काफी दूर है स्टेडियम से, मतलब एरिया के एकदम पास पास नहीं है, राइट। तो क्या होता है, तो उतना वाइब्रेंट इम्पैक्ट नहीं हो रहा है अवे टीम के लिए, उनके लिए इजी लग रहा है। मैं अगर आपको बोलूं इस्ट बंगाल वाला मैच में आप लोग का, मतलब आई थिंक आप लोग को जीतना, जो वारिद भी बोल रहा था, यू कुड हैव वॉन दैट गेम अगर वो गोल हो जाता। अब इफ्स एंड बट्स में तो कुछ नहीं होता, बट अगर मैं केरला मैच भी देखूं, आप लोग को एक चांस मिला था जो बाढ़ में लग गया। लक इज ऑलरेडी अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट में गया है 2-3 जगह पे, ये एकदम इट हैज टू, अगर मैं पॉजिटिव का बात करूं, एक लक हैज नॉट गॉन योर साइड इफ आई सी, राइट। तो लक आपके फॉर में नहीं जा रहा है, तो आपको नहीं लगता टिकटिंग प्राइस थोड़ा कम करना चाहिए? बिकॉज एक आप तो वर्ल्ड कप फीवर में आप मैच कर रहे हो, वो भी नॉर्मल प्राइस में, ये क्या मतलब 200 रुपीज, 250, 300 रुपीज, और आपका सीजन पास है कुछ आप लोग का, जैसे कोलकाता में और अदर क्लब्स, हैदराबाद ने ऑलरेडी सीजन पास स्टार्ट किया है, आप लोग का है कुछ ऐसा सीजन पास? Yeah, like if you know look at the history of ticketing prices for the club, back in 2014 it was around 150 and 200, and with the years it increased to like, around 400 to 450. So, but at that phase, it was backed up by the craze and the management was also proactive in the initial years. And then again, when the performance dropped, as you have already mentioned, if you keep the ticket prices high, then people won't come, right? And if you look at the Duran Cup, in the first match when the stadium was almost full, tickets were given to the students, which should be given at a very nominal cost, and the ticket prices were kept in check. And therefore, if you see in the initial matches of the Duran Cup, the stadium was almost full. That's not the only factor, back in the Northeast, it gets dark very soon than they compared to the rest of the mainland. So, transportation also remains a factor. Transportation was ensured during the Durand Cup and also during the initial stages of the ISL. But nowadays, what happens, if you look at where the Indira Gandhi Athletic Stadium is there in Guwahati, it's on the outskirts. So if you do not give transportation facilities to the common people, and if you keep the ticket prices so high, and football at the end is a working man's game, and it has remained so. So it becomes a bit of problem for the students and then for the rest of the players who are people who are economically weaker to go and support the team, and that too combine it with not good performances, so it becomes really difficult. And as you have mentioned about the luck factor, I would like to say that fortune favors the brave. Play brave, play well, results will follow. Yeah. I also want to add one more point here regarding the ticket price. See, like I live around 350 kilometers away from the Guwahati. So when I go to watch a match, then it takes me around 2000 rupees. Like कम से कम 2000 रुपए का खर्चा हो जाता है आने जाने का. Plus there is of course fooding का होता है, lodging का होता है, then including the ticket price. So that is also plays a very vital role regarding the supporting the team in this kind of situation. तो अगर मैनेजमेंट टिकट प्राइस थोड़ा सा कम कर देता है तो ये फैंस के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जो फैंस है वो पूरा स्कैटर्ड है. लाइक दे कम फ्रॉम सो फार प्लेसेस. Someone coming from the Bongaigaon, someone coming from the Jorhat, someone coming from the Dibrugarh. So this is a very far away places. Like और बहुत ही और जैसे कि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना सही नहीं है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रीच द स्टेडियम टू सपोर्ट द टीम. तो ये भी कुछ फैक्टर्स है जो आई थिंक मैनेजमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, और जो टिकट प्राइस है उसको अगर कम कर दे तो ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट कुछ ऐसा लगेगा फैंस को कि एटलीस्ट मैनेजमेंट कुछ सोच रहा है फैंस के बारे में. या So rightly said, actually this is a very important point that you have made, that आप 350 किलोमीटर दूर, मतलब 350 750 किलोमीटर जर्नी तो हम लोग शॉर्ट जर्नी में चले जाते हैं. अगर इफ यू गो फ्रॉम अदर पार्ट में 700 किलोमीटर में, तो मैं घूमने चले जाऊंगा अपना समर वेकेशन में.
तो आप 700 Yes, yes, किलोमीटर अप डाउन exactly. मैच खेलने देखने जाओगे? हाँ, ये तो it takes काफी 8 hours, it's a you know. And 8 घंटे India, we लगते have इतने हैं a, सारे पहुंचने के लिए। प्रॉब्लम्स है. and just to add आप to लोग का one पहले के thing, we पिकअप have ड्रॉप this. था क्या कैसे? Just to add one बताइए thing, we बताइए have also बताइए. this Highlander Brigade wing from Delhi, and so we visit like from the capital of India to we visit Guwahati to watch and support the team. So the Highlander Brigade wing of Delhi, to shout out to them for their amazing support. And yes, Pele, in the first initial stages, some ASTC had combined with ISL to give the transportation, but now it's almost non-existent. मतलब अभी कोई सोच ही नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट सोच रहा है, ना मैनेजमेंट सोच रहा है, मतलब सब सो ही रहे हैं. तो सीधा बात शायद मतलब वी शायद हैव टू बी. बताइए हाँ, मेरा बताइए एक तो बताओ बात था, आपने. वही वही पॉइंट में मैं जा रहा था. एक्चुअली उन लोग का बात सुनकर यही पता चल रहा है कि इट हैज टू बी अ एफर्ट ऑफ एवरीवन, कंबाइंड एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड द गवर्नमेंट. वो जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी की बात बोल रहा है, एवरीवन हैज टू टेक एन इनिशिएटिव टू प्रमोट दिस फुटबॉल. So you need to get behind the team if they are not performing well. It's is all the supporters also who are the 12th man. So सबको एक साथ आना चाहिए फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए आइलैंड नॉर्थ ईस्ट में. वही मेरा माने इन लोग से बात करके वही पता चल रहा है कि they are not getting proper transportation facilities and they cannot communicate. They want to go to the field. I think that's the main problem. I think everyone need to look into it. सो द पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे बेसिकली, दो जगह पे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली. इफ आई सी दैट देयर हैज बीन थ्री प्लेसेस वेयर वी आर नॉट एबल टू. अगर नॉर्थ ईस्ट का मैं ग्राफ देखूं परफॉर्मेंस का, देयर हैव बीन थ्री प्लेसेस. मेरे को लगा फर्स्ट फेज था आपका पहला 2 मैच का, वो आपने जब हारा था. सेकेंड मैच जो आया था उसमें भी आप लोग ने हारा, बट देयर हैज बीन सम पॉजिटिव ऑफ 45 मिनट्स का एक स्पेल आप लोग ने खेला हर मैच में. मेरे को जो लगा है 45 मिनट्स स्पेल आप लोग ने खेला है, बट समहाउ यू आर नॉट लकी. यहाँ पर एक फैन, यहाँ पर वन कमेंट हैज कम फ्रॉम शुभ्रनील. ही सेज that we have problem, but luck we had is our luck. We had signed some good Indian players like Jitin, but they're not performing as expected. So what can we do? Right? आप लोग का नेशनल टीम प्लेयर्स का प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकॉज फॉरेनर्स मेरे को उतने खराब नहीं लगे थे. पहला मैच है जब मैं ईस्ट बंगाल वाला मैच पूरा देखा था, एंड आपका केरला मैच भी देखा था. आपका केरला के साथ एनएफसी का जो मैच था वो भी मैंने देखा था. और अगर मैं बोलूं पहला मैच जो बेंगलुरु के साथ आप खेले थे, आपका फॉरेनर्स का अच्छा कंट्रीब्यूशन था उस मैच में. देयर वर स्पेल्स, और आप लोग खुदा ना खास्ता वो लोग मैच जीत सकते थे वो मैच. मतलब अगर मैं रफली पूछूं, आइडियली बेंगलुरु शुड बी द लास्ट टीम ऑफ द टेबल राइट नाउ, इफ यू आस्क मी बीइंग अ न्यूट्रल. बिकॉज एनयूएफसी के साथ जो उन्होंने 3 पॉइंट लिया था, वो 3 पॉइंट उनको गिफ्ट किया गया है. दे हैव नॉट अर्नड इट. They have been gifted by the super standard of our Indian referees we have in ISL, because the super standard I say, because ये लोग चीट करके भी मैच हरा सकते. जीता हुआ मैच जो डिजर्विंग टीम उसको हरा के, एंड आई थिंक दैट बिट्रे हैड पेड. जो आदित्य भी जो बोल रहा था सीजन के पहले, दैट बिट्रे हैज दैट डिसीजन हैज पेड अ लॉन्ग रोल. तो काफी इंपॉर्टेंट था वो चीज. आप आई वांट टू हैव योर से प्लीज. Yeah, like the lack of quality of the Indian players has always been a problem, right? If you give the role of striking to Parthiv, with due respect to him, he's a very inexperienced player, right? You cannot give the whole burden of leading the attack of a Indian of a ISL standard team to a very young lad, although he has played well, right? So yeah, and these guys Imran Khan and these guys also not supplementing or like complementing to what the foreigners are doing. So lack of cohesion of the team from the Indian players has been always a problem for the Northeast United FC, and it has also remained a problem as expected. And as rightly pointed out, like Jitin also is not playing very good. So yeah, lack of quality Indian players has been a problem this season. Can't deny that. पूछ रहे एक चीज, एवरीबडी इज आस्किंग वन थिंग. गैलेगो एंड ब्राउन इज द बिगेस्ट मिस्टेक नॉट रिटेनिंग. आपको लग रहा है ये इज द रीजन? दिस इज
तो ओनली गैलोगो इज अ फैन फेवरेट, आप लोग का वो तो एकदम मतलब आप लोग तो गैलोगो No, को मतलब आप ले आओ, आप टीम में ले आओ. exactly. But on a more serious note, you can also understand the rationale of not retaining Gallego. And out of the 4 seasons, in 2 seasons he was not fit, and the team suffered because of that. So fitness has been an issue. But due credit, in the 2 seasons where he was fit, we went to the knockouts. So I can understand why the management did not retain Gallego, but if we would have looked better into his fitness and all, if he would have stayed with us, I think we would have been levels up than what we has been now. And that too, Brown is also like we are really missing the towering headers and the strikes that Brown and the crucial points that he delivered because of the goals that he scored. Yeah, can't deny we are missing those players. So before we sign up for today, because आप लोग ने एक इम्पोर्टेंट डे था आज, मेरे को लग रहा था, मैं पूछा भी पवन को दैट भाई आज तो पोर्तुगल का गेम है, कोई ऐसा तो है नहीं है पोर्तुगल का फैन यार, हम लोग का तो शायद आज टेलीकास्ट ही ना हो. तो उसने बोला नहीं नहीं यार सब है, दे विल बी देयर. मतलब थैंक यू यार फॉर बीइंग हियर. आप लोग ने बहुत, आप लोग का जो नॉलेज आपने शेयर किया, आई थिंक दैट विल रिमेन विद मी एंड both Anirban, me and Adit. So before we close it for today, so I want a short brief for the way forward. तीनों से ही मैं पूछूंगा एक ही क्वेश्चन. खराब साल गया है, everybody knows it is a bad start to the season, but sometimes सब बोलते हैं ना, good start is always a indication of good things coming in. कभी कभी बैड स्टार्ट में भी आप लोग टर्न अराउंड कर सकते हो क्या, जैसे खलीद जमील के टाइम हुआ था, वो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो ये अब मैं सबसे एक पॉइंट जानना चाहता हूँ फॉर द फैंस हु आर देयर, हु आर कमेंटिंग नाउ आल्सो. सब कमेंट में डाल नहीं पाया हूँ, बट थैंक्स टू हाइलैंडर ब्रिगेड to live stream this and in their Facebook page. Thank you all. तो first we'll start with अंशुमन. अंशुमन काफी ज्यादा बोले नहीं है, तो स्टार एक्सपर्ट थे. कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उनके. तो Anshuman, I'll start with you and we'll go over to Vikas and last we'll finish with Manas. All over to you, Anshuman. So, as you mentioned earlier, na, that yeah, we did not have a very great start of the season, but the season is not yet over and it's not even halfway there. So we still believe, we are optimistic that yeah, we can move forward and we can create that miracle again. And hopefully the six team qualifying system can help us. And yeah, I hope that yeah, we qualify and yeah, we are optimistic. Yeah, definitely Manas? we are very optimistic. Yeah, definitely we are very optimistic because अभी सिर्फ 6 मैचेस हुए हैं और अभी भी 14 मैचेस आर स्टिल लेफ्ट. तो अगर जो हमारे जो जहाँ पे कमी हो रही है हमारी, अगर इस कमी को मैनेजमेंट अगर रेक्टिफाई कर पाए, looking forward to the upcoming matches, then I think yes, we have a pretty good chance to qualify to the playoffs. Yeah. Manas, And over last. to me now, I guess. Yeah. First of all, to end this, as from the Highlander Brigade, we are really delighted that you guys welcomed us, and we are really grateful for that, for giving us this opportunity. And because unlike the management, you guys want to listen to us and respond, right? So the message would be like, play bold and just show your performances, play brave. Make a few tactical adjustments if need be. And one on a end note, like the Highlander Brigade is always there. We always work through together. So just play, just give your best. The support will continue. The relentless support will continue from us. Yes. रिलेंटलेस, एक आपने अच्छा बात बोला, रिलेंटलेस सपोर्ट एकदम. ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ, रिलेंटलेस सपोर्ट ही है लग रहा है. बट एक चीज मैं आप लोग को बोलूंगा दैट आप लोग ने इतना बिजी शेड्यूल में आप लोग का, आई थिंक एवरीबडी इज वर्किंग समवेयर और द अदर, एंड आप लोग ने टाइम निकाला इन दिस वर्ल्ड कप फीवर ऑल्सो. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड पीपल स्टिल वॉचिंग अस इन द टाइम जहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप में खेल रहा है. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग यार, और इट्स ओनली पॉसिबल आप लोग के लिए हुआ था. आई थिंक
at least people like you is ruling the roast for Indian football. I think a day is not far in next 10-12 years that we will be also part of this World Cup. नहीं हो रहा है तो क्या हुआ है, हम लोग कर सकते हैं. The Definitely, belief should be definitely. there in every individual. और वो possible है आपके through आप the fan clubs like you who are the pillars for Indian football, which was unlikely. कुछ साल पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे. जो आप लोग ने किया है, मैं जितना भी बोलूँ कम पड़ जाएगा. I think all the fan clubs of all the ISL clubs, including all the clubs, मैं नाम नहीं लूंगा, but Highlander Brigade के लिए शो है तो आज का शाम Highlander Brigade के नाम. So thank you all. Thank you Anirban for joining in for Thank a you. short time. Also you have And joined thank in. you for the Thank you. Highlander Brigade also. It was great talking with you all. Thanks and hope Thank for you the so best. much. Thank you so Thank much. you. थैंक यू यार. तो सबका एक बिफोर वी साइन अप, सबका फेवरेट टीम कौन है वर्ल्ड कप में? सुन लो तुम. पहले मैं अंशुमन से पूछता हूँ, फेवरेट टीम कौन है वर्ल्ड कप में? सऊदी अरेबिया में है तो है. सऊदी अरेबिया है क्या? अर्जेंटीना. अरे यार मैंने उल्टा बोल दिया. तो विकास, My कौन है favorite team is England. इंग्लैंड. चलो हाई फाइव भाई, हाई फाइव कोलकाता से. मी आल्सो. एंड मानस Like I would, मानस को देखने से ब्राजील लग रहा है. न स्पेन है, न स्पेन. no. Like I would be really happy if Brazil wins, but I would not be upset if, because of Barcelona reasons, if Argentina wins this cup. Yeah. ओके. तो अनिर्बन, तुम्हारा फेवरेट टीम बताओ यार. No, my favorite team is one and only Brazil. So fingers crossed for today's match. ओके. ठीक है, लेट्स सी. आज ब्राजील का गेम है 12:30. आई थिंक ऑल ऑफ अस विल सी. ये व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग का रहेगा हाईलैंड ब्रिगेड के साथ. हम लोग कनेक्ट करेंगे. विल टॉक आफ्टर द मैच. विल कनेक्ट विथ यू ऑल एवरी टाइम. सो एक चीज मैं आपको बोल दूं, दिस इज द चैनल इंडियन फूड एंड फुटबॉल. काइंडली हाईलैंडर ब्रिगेड की तरफ से अगर आप लोग ऑफिशियली बोले सबको सब्सक्राइब करना हम लोग के लिए अच्छा है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस फॉर द बेनिफिशियल ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो तीनों एक एक लाइन अगर बोल दो, दैट विल बी ग्रेट फॉर द channel. Thank you. Okay, like what your channel is doing is you're going to the grassroots and Indian food connecting to and the fans who football. matters. Exactly the channel Indian Food and Football. What they are doing is they're going to the grassroots and connecting to the fans. They're bringing the game closer. They are giving a voice to the fans. So it's a quite remarkable thing that you guys are doing. I know miles ahead. Go on, march on. All the best for the future, guys. And I would like to request all the members of Highlander Brigade to follow his channel, and he's doing a really great job. And I wish you all the best for your channel, and I hope that you will get more and more subscribers in just 1 or 2 years. Thank you. And yeah, there are not much channels who cover Indian football a lot. You are one of them, so best of luck for your future endeavors. And it's great that someone is covering Indian football from grassroots levels. So yeah, all the best. Thank you guys for your lovely comments. Thanks. मैं जितना भी बोलूँ कम पड़ जाएगा. All the best for tomorrow's game. अच्छा खेलो. वर्ल्ड कप बाहर में जाए, नॉर्थ ईस्ट को अच्छा खेलना चाहिए. दैट्स द थिंग. वर्ल्ड कप तो होता ही रहेगा. कोई किसी दिन इंग्लैंड जीतेगा, कोई ब्राजील जीतेगा, कोई पोर्तुगल जीतेगा, मगर नॉर्थ ईस्ट कल अच्छा खेले. As a neutral, I want North East to play good, so the fans come into the stadium and we have a bright days ahead in North East here. ठीक है. Good night from my side यार. Good night. Thank you यार for Good night joining to in. everyone. तीनों को. And a big We'll thumbs up connect to after you all tomorrow's game. for WhatsApp में tomorrow's बात match. करेंगे कल. Oh my God. ठीक है. चलो bye. Okay, Good night. definitely. Thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you यार.